Good morning, all of you. Today, again, welcome you in the class. Today, we will learn about the quadrilateral, special type of quadrilateral. In the previous part, we have discussed the theorem 8.1, in which we proved that diagonal divided into two congruent triangles. Now our topic is theorem 8.2, a parallelogram in which opposite angles are equal. So for that, give as a figure, draw the parallelogram and write given parallelogram ABCD in which side AB is equal to CD. Only you write here because this is the result. We need to prove it also. In this theorem, we have to prove AB is equal to CD and BC is equal to AD. Join AC. Now you consider triangle ABC and CDA. Angle 1 is equal to 3, vertical opposite angle. AC is equal to CA, कॉमन पार्ट है दोनों का. Angle 2 is equal to angle 4. Again, this is vertical opposite angle. So both the triangles are congruent by ASA rule. So therefore we can write that by CPCT AB is equal to CD and BC is equal to AD. Theorem. Now the next theorem 8.3, in which we have to prove opposite 8.4 angles are equal. So you have to give the same proof for 8.4 and then at last you write angle B is equal to D and similarly angle A is equal to C. Only this one is changed. 8.3 and 8.5 we will consider the. Now the theorem 8.3, this is the converse property of 8.2, in which ABCD is a quadrilateral, not a parallelogram, and we have to prove that ABCD is a parallelogram. हमें ABCD पैरेललोग्राम होगा तो हम यहाँ गिवन लिखेंगे. गिवन में लिखेंगे ABCD is a quadrilateral in which ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो ऐसा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. यहां लिखेंगे इन विच AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD. ये गिवन इस क्वेश्चन में. हमारी थ्योरम है कि ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है, देन प्रूव इट इज ए पैरेललोग्राम. हमें टू प्रूव करना है यहां पर ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम प्रूव करना है. A quadrilateral, any quadrilateral will be a parallelogram if its opposite sides are parallel. तो हमें इनकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करेंगे. प्रूफ in triangle ABC and triangle CDA, AB is equal to CD. This is given. BC is equal to AD, also given, and AC is equal to CA. This is the common side. Common.
Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA by SSS congruency rule. So therefore angle 1 is equal to 3, which is CPCT, which is a pair of alternate angles. ये अल्टरनेट एंगल के पेयर हैं, तो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD. Similarly, we can prove BC parallel to AD, and yesterday I given you the definition that if opposite sides are parallel then it is a parallelogram. So we can write therefore ABCD is a parallelogram. एट 8.4 you can do as we have done the 8.2. the same proof. आपको रिजल्ट लास्ट में चेंज करना है. Now 8.5, this is converse of 8.4. 8.5 में again the quadrilateral is given in which opposite angles are equal and we need to prove this will be a parallelogram. You know a quadrilateral will be a parallelogram if opposite sides are parallel, only one way is there. So given quadrilateral ABCD in which एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम. नो कंस्ट्रक्शन इज देयर, देन प्रूफ. सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, गिवन लिखेंगे. एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, गिवन लिखेंगे इसको भी. सिंस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है, तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल. नाउ यू कैन रिप्लेस C by A and D by B. तो we get angle A plus angle B plus angle A plus angle B is equal to 360 using first and second. You get twice of angle A, so twice of angle A plus angle B is equal to 360. 360 को कैंसिल कर देंगे 180. तो therefore we get angle A plus angle B is equal to 180. ये जो दोनों एंगल है, दीज आर द को इंटीरियर एंगल, सो लाइन विल बी पैरेलल. हम लिखेंगे विच इज अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल. ये को इंटीरियर एंगल का पेयर है, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा ये दोनों पेयर इक्वल है, तो हम वी कैन गेट, तो देयरफॉर वी कैन गिव रिजल्ट दैट AD पैरेलल टू BC. सिमिलरली वी कैन प्रूव AB पैरेलल टू CD. तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. विच इज योर रिजल्ट? नाउ द नेक्स्ट थ्योरम 8.6. 8.6 given. 8.6 diagonal
bisect each other. Join the diagonals which are intersecting at O. Given ABCD is a parallelogram whose diagonals are intersecting at O. To prove AO is equal to OC and OB is equal to OD. इन पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है तो वी नीड टू कंसीडर ट्राइंगल AOB एंड COD. Proof in triangle AOB and triangle COD. Angle 1 is equal to 2. Angle 1 is equal to 2. Vertical opposite angle AB is equal to CD. Opposite side of parallelogram. हम इसको प्रूव कर सके हैं, सो वी कैन यूज दिस रिजल्ट. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB congruent to triangle COD. रूल ASA. तो बाय CPCT वी कैन राइट OA is equal to OC and OB is equal to OD. Thank you.